Good morning, class. Now, in this lecture, as you can see, this lecture is dedicated to, let's say, exception handling in Java, or how to create a user-defined exception. Now, once we talk about user-defined exceptions in Java, first thing to be understood is that you have to create a class by any name, which should be subclass from exception class. Exception, as I said in my last lecture, the previous lecture of theory, where I've shown you the hierarchy of the exceptions and their respective classes. So exception is the base class of all the exception classes used in Java. So when we are going to create a user-defined exceptions also, then we'll extend it from exception class. Means मेरी जो अपनी user-defined exception class होगी, that has to be derived, okay, derived from the exception class. First thing. Next, as you can see in this class, I have written this constructor, which is going to display a message, which would be passed as a parameter to the constructor of this user-defined exception class, where it will be raised. Next is public toString function, which is going to format my message. Exception raised is, and there is a function known as getMessage. GetMessage is a member function, and you can see here I am directly calling getMessage function. So this means that this is a member function of my base class exception. तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो भी एज अ पैरामीटर हम str में दैट इज ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, उसको वहां से रिट्रीव करेगा और यहाँ पे पास ऑन करके इसके साथ concatenate करेगा एंड प्रिंट कर देगा. That is the role of this function toString, and toString is a return type string, so it is going to return a string encapsulated in double quotes. Next, in my implementation class, ये demo exception क्या है, मेरी implementation class, and the program also I have saved it by the name demo exception.java. डेमो एक्सेप्शन क्लास में मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है चेक एक्सेप्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू थ्रो अ यूजर एक्सेप्शन. तो आई हैव यूज्ड अ कीवर्ड थ्रोज. तो मींस इस फंक्शन में इट हैज द to throw kind of an exception and how it will throw, क्योंकि यूजर डिफाइंड है, ऑटोमेटिक थ्रो तो होगा नहीं. तो आई हैव यूज्ड अ थ्रो कीवर्ड ओवर हियर. So throws and throw, both of them I've used. Throw new user exception. New user exception means object. I've created a runtime object of user exception class, and इस user exception class के object को मैंने function में क्या पास करा, user defined exception raised. तो ये user defined exception raised जो message है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा str में. जो ऊपर हमने इस यहाँ पे str बनाया था, यहाँ str में आएगा that message that I've passed over here, user defined exception raised. ये पूरा मैसेज जो एज एन ऑब्जेक्ट में मैंने पास किया है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन रेज, दिस विल बी पास्ड ऑन टू दिस str वेरिएबल, और ये str इसको फर्दर पास ऑन करेगा सुपर फंक्शन के थ्रू str. तो ये सुपर फंक्शन क्या करेगा, जो मैसेज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन रेज्ड यहाँ पे पास ऑन हो रहा है, ये सुपर फंक्शन के थ्रू पास ऑन हो जाएगा एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे. ओके. Now, next I've done is my main function, because this function is the first function to be executed. Inside this function, I have applied this try catch block. Try me, what I have done is I have created the object of demo exception class dx equals to new demo exception, and dx.checkexp. Chkexp means this function I've called, which has the tendency to throw an exception. Now, once the exception is thrown, क्या होगा, यहाँ पे यूजर एक्सेप्शन कैच में आएगा. यूजर एक्सेप्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट यूई बनाया है इनसाइड द कैच ब्लॉक. तो यहाँ पे जो रन टाइम ऑब्जेक्ट हमने ये थ्रो न्यू यूजर एक्सेप्शन किया था, जो ये रन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, ये कहाँ जाके कैच होगा, इस यूई में. और ये यूई में जो भी मैसेज पास ऑन हुआ है, उसको हम एसओपी फंक्शन के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करा देंगे. तो टू स्ट्रिंग फंक्शन जो बनाया था ना, वो टू स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ वर्क करेगा, और यूई का जब ऑब्जेक्ट हम प्रिंट कराएंगे तो एक्चुअली ये टू स्ट्रिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये पूरा मैसेज कॉन्कैटिनेट होके हो जाएगा प्रिंट. तो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. You may note down this program and run into your respective systems. I'll show you the output also. We'll get back. I'll again share my screen, the output screen, command prompt. As you can see,
here. What I'll do is I'll compile javac demo exception.java. If there is any error, it will show you the error, else it will compile and we'll get the command prompt. We have got the command prompt, means there is no error. Next, I'm going to execute Java demo exception and we'll get the output. See, you've got the output. Exception raised is user-defined exception raised. Okay, so the exception raised is ये यहाँ से आया, ये exception raised is and get message के through आया user-defined exception raised. ठीक. So by this, I've completed a demo on user-defined exception. Now you can practice your questions, or I'll share the number of questions on your WhatsApp group, wherein you will be asked to write a program to ascertain that you have understood how to create user-defined exceptions. So that's it for today. Thank you.